So systematic error is the error the size of which is roughly constant and the measurement is either greater or less than the actual value. या greater होगी या less होगी, right? So for example again हम example लेते हैं कि एक कोई भी measurement है, कोई line है, कोई cylinder है, its true value is 10.0 centimeters. You take its value, you measure it, and its value comes out to be 10.5 centimeter. Then again, you take second reading, it comes out to be 10.5 centimeter. Again, you take its value comes out to be 10.4 centimeter. Again, you take its reading, its value comes out to be 10.5 centimeter. Now, if you see, all these readings are greater than the actual value and their size is roughly constant, about 0.5 centimeter की आपके difference आ रहा है, error 0.5 centimeter की आ रही है. So there is systematic error in this measurement, right? एक और एग्जांपल ले लेते हैं. ट्रू वैल्यू आपकी अगेन 10.0 सेंटीमीटर. You measure it, it comes out to be 9.7 centimeter. Again, you take 9.7 centimeter. Again, 9.7 centimeter, 9.8 centimeter. So again, all these readings are less than the true value and their size is roughly constant, about 0.3 centimeter less than the actual value. So again, this error is because of systematic error. Now again, एक और example लेते हैं. Again वही वाली value लेते हैं. True value is 10.0 centimeter. Once you measure, its value comes out to be 10.2 centimeter. The next measured value comes out to be 9.9 centimeter, then 10.1 centimeter, then 9.8 centimeter. Now, in this example, some of the readings are greater than the true value and some of the readings are less than the true value. So this is not due to systematic error. Right? कभी पॉजिटिव में जा रही हैं, ग्रेटर हो रही हैं, कभी लेस हो रही हैं. सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट ड्यू टू सिस्टमैटिक एरर. ऊपर वाली जो एग्जांपल्स थी उनके अंदर इट वाज द एरर वाज ड्यू टू सिस्टमैटिक एरर्स. कोई सिस्टमैटिकली कोई एरर आ रही है, कोई ऐसी रीजन है जिसकी वजह से हर दफा ऑलमोस्ट एक ही जितनी डिविएशन आ रही है, एक ही जितनी एरर आ रही है. Now, what are the sources of systematic errors, or you can say what are the different examples? So there are two sources, two reasons of systematic error. One is due to some fault in the instrument. आपके instrument में भी कोई fault हो. और second, you are doing some mistake. The experimenter is doing some mistake. The observer is doing some mistake. So first example of systematic error is the famous zero error. So ये आपने all levels में भी zero error study की थी. So like if you see this figure, the jaws are closed here. If you see, so this micrometer screw gauge should show the value of 0, but it is showing 0.01 millimeter. यहाँ पे अगर आप देखें तो it is the first deviation on the circular scale that is coinciding with this datum line. So इसके अंदर जो zero error है that is plus 0.01 millimeter. So now if you take any reading from this micrometer without doing any zero correction, आप zero correction वाला procedure ना करें और इसी micrometer से आप reading लेना start कर दें, so every time you take a reading, it will be 0.01 millimeter greater than the actual one. हर दफा 0.01 millimeter greater value आपको मिलेगी, and that is why it will be a systematic error.
Similarly, if you see this figure, it is an ammeter, and when it is not connected in any circuit and the current is 0, it is showing some value. It should be at 0, but it is less than 0. It is about minus 0.2 एम्पियर की इसके अंदर एरर आ रही है, जीरो एरर. So every time you use this ammeter, your measured value will be less than the true value. It will be less than the actual value by 0.2 ampere. Like अगर आपकी true value होनी थी 10 एम्पियर, तो इसने आपको जो measured value दिखानी है that will be 9.8 एम्पियर. दोबारा से करेंगे फिर भी इसने दिखानी 9.8 ही है, because it has zero error of minus 0.2 ampere. The second problem in the instrument can be a wrongly calibrated scale. Calibration आपने करनी होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर. So for example, आपके पास एक मीटर रूल है, 1 centimeter, 2 centimeter, 3, 4. This should be the actual calibration, but किसी सस्ते से मैन्युफैक्चरर ने बना दी और ऐसे बस लगा दी, तो उसने यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 1 2 3. Now there is a difference in the calibration. Actual calibration यहाँ पे बननी थी, but it is showing otherwise. ये correctly calibrated नहीं है, उसके ऊपर जो डिवीजन जो मार्किंग्स लगी हुई हैं that is not correct. So that is why अगर आप इस मीटर रूल से आप कोई भी measurement लेंगे, that measurement will be wrong, and it will always be wrong, and that is why it will be a systematic error. Another example of wrongly calibrated scale is you can take an electronic balance. You studied in O levels that electronic balance करता क्या है? It actually measures the weight, it actually senses the weight, and then it divides that weight by 9.81. O levels में आपने G की वैल्यू 9.8 स्टडी की थी. Now you are in advanced level, so now you have to write it as 9.81. So electronic balance ने weight को sense करना है, and then it has to divide it with 9.81 to give you the reading. अब अगर उसकी जो भी प्रोग्रामिंग हुई है उसके अंदर instead of 9.81 के अगर 9 like 10 से उन्होंने डिवाइड कर दिया हुआ है, so every time you take reading from that instrument, the reading will be wrong. Okay, question. I have a question. What are the chances that our measuring instruments are calibrated wrongly? In A levels, when you do the practical work, it is assumed that your instruments are calibrated properly. So don't worry about that in practical situation. It is not your headache. And it depends upon instrument to instrument. Some instruments need proper calibration, और अगर आपको पता चल जाए कि it is poorly calibrated, its calibration is not right, it is, तो उसके भी different methods होते हैं इसको हैंडल करने के. लाइक अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो एरर है और वो रिमूव नहीं हो रही, तो आपके पास जीरो करेक्शन का ऑप्शन मौजूद होता है. सिमिलरली अगर किसी के अंदर रॉन्गली कैलिब्रेशन हुई हो, तो उसके भी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं विच कैन बी एम्प्लॉयड. अच्छा, नाउ अब थोड़ा सा ऑब्जर्वर पर्सनल एरर किस तरीके की हो सकती हैं जिनकी वजह से सिस्टमैटिक एरर आ सकता है. कंसिस्टेंट पर्सनल एरर्स. कंसिस्टेंट, like for example, I am going to read a miring cylinder, the volume in a miring cylinder, and I am consistently reading upper meniscus instead of lower meniscus. हर दफा जब मैं लोअर मेनिस्कस की जगह अपर मेनिस्कस को रीड करूंगा, तो every time I will get more reading than the true value. Similarly, constant parallax error. For example, just suppose that I have to
place my eyes in this direction in order to measure the reading. अब मैं हर दफा क्या कर रहा हूँ, instead of having this direction, I am at this position. पहली रीडिंग ली from this position, second from this position, third from this position. So every time my position is wrong and every time my wrong position is same. So every time my measurement will have same error. So that is why it will be a systematic error. अगर मैं ये करूं कि मेरी पोजीशन तो रॉन्ग हो बट एवरी टाइम इट इज नॉट एट द सेम पोजीशन, then the error will not be called as systematic error. For example, this should be my actual position to read the scale. मैंने फर्स्ट टाइम इधर से ले ली, सेकेंड टाइम इधर से ले ली, थर्ड टाइम यहाँ से ले ली. So now although my position is wrong, but every time my wrong position is not the same. So now the error will not be systematic. Systematic error कब होगी? जब मेरी position wrong होगी and it will be same every time. Got it? Okay, the fourth source or the fourth example of systematic error is error due to wrong assumptions. Again, I will give you an example. The value of G is actually 9.81 meter per second square. Now, suppose you have to determine the weight of an object. You measure the mass and then mass आपने measure कर लिया. Then, while finding weight, you multiply that mass with 10 instead of 9.81. So it is your wrong assumption. आपने wrong assume कर लिया है कि the value of G is 10. It should be 9.81. So because of this wrong assumption, your all values of the weight will be wrong. So that will be a systematic error. Similarly, G की value आपकी vary भी करती है from ground to high altitude, but उसका effect less ही होता है. सो दिस इज एन एग्जांपल रॉन्ग अजम्पशन की. इसके अलावा किसी भी चीज़ की अगर आपने अजम्पशन गलत आपने ले लिया है तो उसकी वजह से आपकी मेजरमेंट में एरर आ जाएगा एंड दैट एरर विल बी सिस्टमेटिक एरर बिकॉज इट विल बी देयर इन ईच एंड एवरी मेजरमेंट अनलेस यू करेक्ट इट. अब सिस्टमेटिक एरर जो हैं दे कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स एंड देन एवरेजिंग. ये जो आपने ओ लेवल्स में स्टडी किया था, हर दूसरे एटीपी के अंदर क्वेश्चन में आता था कि वी कैन इम्प्रूव द मेजरमेंट, वी कैन मेक इट मोर एक्यूरेट बाय टेकिंग अ नंबर ऑफ रीडिंग्स एंड देन टेकिंग एवरेज. दिस इज नॉट फॉर सिस्टमेटिक एरर. सिस्टमेटिक एरर कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय दिस मेथड. तो फिर ये किस तरीके से रिड्यूस की जाएगी? इट कैन बी रिड्यूस्ड और eliminated. सिस्टमेटिक एरर होगी, इट कैन बी completely eliminated. How it can be eliminated, or in sometimes it is reduced by improving experimental techniques and applying correction factors. For example, improving experimental techniques. For example, systematic error is due to the fact that you are reading the upper meniscus instead of lower meniscus. तो आप इस experimental technique को correct करेंगे. As soon as you start reading the bottom meniscus, lower meniscus, all your measurements will be correct. तो आपकी systematic error जो होगी वो completely eliminate हो जाएगी. Similarly, applying correction factor. अब ये कैसे होगा? लाइक आपने जीरो करेक्शन पड़ी हुई है. फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ जीरो एरर इन एन इंस्ट्रूमेंट, इन माइक्रोमीटर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, आपने उसको नोट कर लिया कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर इतनी जीरो एरर है, तो मेजरमेंट लेने के बाद आपने जीरो करेक्शन लगा दी. तो इस तरीके से भी जो आपकी मेजर्ड वैल्यू होगी उसके अंदर सिस्टमेटिक एरर नहीं रहेगी. इट विल बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड. हाउएवर, लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स और एवरेज से आपकी सिस्टमेटिक एरर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला. नाउ एनी क्वेश्चन अबाउट सिस्टमेटिक एरर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रैंडम एरर.
Random error is the error which causes the reading to be sometimes greater and sometimes smaller than the true value. और उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है. लाइक फॉर एग्जांपल आपकी जो ट्रू वैल्यू थी, आपकी जो ट्रू वैल्यू थी दैट वाज 10 सेंटीमीटर, और जब आपने मेजर किया तो जो आपकी मेजर्ड वैल्यू आई वो एक दफ़ा आपने की तो वो आ गई 9.9 सेंटीमीटर, सेकेंड टाइम 10.1 सेंटीमीटर, third time again 9.9, fourth time again 10.1, fifth time 10.2. तो अब इन measured values को अगर आप देखें तो sometimes they are less than the true value like 9.9, 9.9, and sometimes they are greater than the true value like in this example, in this example, in this measured reading. तो ये आपका sometimes less होंगी, sometimes greater होंगी. अच्छा, इसको हम इस तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इन रैंडम एरर जो रीडिंग्स होंगी दे विल बी स्कैटर्ड अराउंड द एक्चुअल वैल्यू 10 थी, उसके अराउंड स्कैटर हुई हैं, थोड़ी कम कुछ ज्यादा, कुछ कोई कम कोई ज्यादा, राइट. सो दिस इज द केस ऑफ रैंडम एरर. अब जो रैंडम एरर का जो कॉज होता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, लेकिन हम कुछ एग्जांपल्स हम देखने लगे हैं कि इनका कॉज होता क्या है. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रैंडम एरर. सो रीडिंग अ स्केल फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स प्रोड्यूस वेरिएबल पैरेलक्स एरर. ये आपको एग्जांपल मैंने सिस्टमैटिक एरर में भी दी थी. सो योर करेक्ट पोजीशन ऑफ आई इज बी. इस स्केल को रीड करने के लिए आपकी आई जो है वो बी के ऊपर होनी चाहिए. अब अगर कभी आप ए से ले रहे हैं, कभी बी से ले रहे हैं, कभी सी से ले रहे हैं, तो अब डिफरेंट एंगल्स आ रहे हैं तो इट विल इंड्यूस रैंडम एरर. अगर आप हर दफा एक ही पोजीशन से लिए जा रहे हैं लाइक सी से लिए जा रहे हैं तो हर दफा इट विल बी either greater or less, so that will be systematic error. But if you sometimes take from A, sometimes from C, sometimes from in between कहीं से ले रहे हैं, तो sometimes the measured value will be greater than the actual value, sometimes the measured value will be less than the actual value, and this will induce random error. देन माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को जब आपने उसके जॉस को क्लोज करना होता है तो उसको अगर आप ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे या कम प्रेशर से क्लोज करेंगे तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, एंड इट विल ऑल्सो कॉज अ रैंडम एरर. देन रीडिंग अ स्केल, जब भी हमने स्केल पढ़ना है और उसमें इंटरपोलेशन करनी है तो उससे भी आपकी जजमेंट क्या है उससे इफेक्ट आ जाता है और रैंडम एरर प्रोड्यूस हो जाती है. लाइक फॉर एग्जांपल लेट मी ड्रॉ अ स्केल ओवर हियर. वन, टू, थ्री, फाइव, सिक्स. अब ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है. अब इसको आप क्या रीड करेंगे. हो सकता है कि कोई एक बंदा इसको रीड करे कि अच्छा जी ये इधर से आ रहा है तो ये तकरीबन 3 के पास ही आ रहा है, तो एक कोई 3 ले ले. दूसरा कहेगा बिकॉज देर इज अ लार्ज डिफरेंस तो इसको 2.5 लेना चाहिए. अब एक्चुअली इट इज इन बिटवीन 2.5 एंड 3, तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत एरर आ जाएगी बिकॉज ये जजमेंट, पर्सनल जजमेंट थी. किसी ने कहा कि अच्छा जी 3 के करीब लग रहा है, किसी ने कहा नहीं 0.5 के करीब लग रहा है. तो ये पर्सनल जजमेंट की वजह से भी रैंडम एरर आ जाती है. Now, fourth example, changes in temperature. You studied that temperature cause thermal expansion and thermal contraction. If the temperature is increased, the things expand. If the temperature is decreased, the things contract. So suppose you are measuring something, आप लैब में गए तब एसी नहीं चल रहा था और कुछ उसके बाद आपने एसी को टर्न ऑन किया 16 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. आफ्टर सम टाइम जो रूम टेम्परेचर था वो 30 डिग्री सेल्सियस से
16 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो उसकी वजह से माइन्यूट सा डिफरेंस आ जाएगा इन द मेजरमेंट्स, एक्चुअल उसकी लेंथ ही चेंज हो जाएगी। तो इस वजह से भी रैंडम एरर आपकी आ सकती है। तो दीज वर सम एग्जांपल्स। अब एक चीज नोट करने वाली ये है कि जो रैंडम एरर्स हैं दे कैन नॉट बी eliminated. Systematic errors, most of the systematic errors are completely eliminated, but random errors जो हैं इनको completely eliminate नहीं किया जा सकता, it is not possible. They always exist, और आप उनको क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस कर सकते हैं। और रिड्यूस कैसे करेंगे? बाय टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स एंड देन टेकिंग एवरेज। और अनदर मेथड क्या होगा कि आप ग्राफ ड्रॉ कर लें और उसके बाद बेस्ट फिट लाइन आप ड्रॉ कर लें। ये जो ये वाला है, बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ देन ड्राइंग बेस्ट फिट लाइन, ये उस केस में होगा व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग समथिंग विच इज बेस्ड अपॉन टू क्वांटिटीज। ठीक है, इन कैलकुलेशंस बेस्ड अपॉन टू क्वांटिटीज। एक क्वांटिटी के ऊपर भी कर सकते हैं, बट यूजुअली उसके अंदर किया नहीं जाता, बिकॉज एक क्वांटिटी के अंदर फिर आपको नंबर ऑफ रीडिंग को एक क्वांटिटी बनाना पड़ेगा। मींस एक्स एक्सिस के ऊपर आप ले लें नंबर ऑफ रीडिंग, और वाई एक्सिस पे आप ले लें एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू। इसकी एग्जांपल अभी हम देखते हैं कि ये किस तरीके से करना है। अगर आपको याद हो तो आपने एक एक्सपेरिमेंट स्टडी किया था मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। सो उसके अंदर आप क्या करते हैं, यू मेजर वोल्टेज, यू मेजर करंट, एंड देन आर इज इक्वल टू वी ओवर आई से आपने उसकी कैलकुलेशंस कर लेनी होती है। तो सपोज आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही हैं वोल्टेज की 2 वोल्ट्स, 4, 6, 8, 10। और आपके पास जो करंट की वैल्यूज हैं वो आ रही है जी, कोई भी वैल्यूज हैं, हम उसके अंदर नहीं जाते। सो रेजिस्टेंस एक मेथड क्या है, आप यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करें, इधर फाइंड करें, इधर फाइंड करें, इधर फाइंड करें, सारे डाटा लेके हर एक का वोल्टेज करंट लेकर आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर ली। लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स आ गई, एटलीस्ट 5, और उसके बाद आपने इसकी एवरेज ले ली। तो दिस इज वन मेथड। और सेकंड मेथड क्या है कि आप आई वी ग्राफ ड्रॉ कर, आई वी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यूज आ जाएंगी। लेट्स सपोज ये आपके पास वैल्यू आ गई, एंड देन आपने क्या किया कि आपने एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ कर। अब जब ये आपके पास लाइन ऑफ बेस्ट फिट आ गई, देन यू विल टेक इट्स ग्रेडियंट। इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट का आप ग्रेडियंट लेंगे, ग्रेडियंट will be 1 over r, उसका आप रेसिप्रोकल लेंगे, तो that will be the value of resistance, and because you have already drawn the line of best fit taking the individual values, तो अब ये जो आपके पास r की वैल्यू आएगी, it will be average value of resistance। और इस मेथड से भी फिर आपने जो रैंडम एरर है उसको मिनिमाइज कर दिया। अच्छा, अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? अच्छा, अब हम इसी की एग्जाम्पल को, ये जो हमने ग्राफ वाले एग्जाम्पल है इसको हमने थोड़ा सा आगे लेके चलना है। वी हैव टू सी हाउ टू सी के वेदर देयर इज सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर बाय लुकिंग एट ग्राफ्स। तो हम यही एग्जाम्पल लेते हैं आपकी रेजिस्टेंस की। सो यू नो दैट V is directly proportional to I, Ohm's law. I is directly proportional to V, which means that if you draw an IV graph, it should be a straight line. If you draw an IV graph, it should be a straight line and it should pass through the origin. Ideally, it should pass through the origin. Now, let's suppose we are doing some experiment, और ये आपका ideal, और यू कैन से थ्योरेटिकल ग्राफ बनेगा।
नाउ लेट्स सपोज हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आई वी ग्राफ जब हमने ड्रॉ किया तो ये कुछ इस तरीके का आया, एक वैल्यू ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, एंड बिकॉज यू हैव अ स्कैटर प्लॉट, इसका आपने ड्रॉ किया है लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट आपकी या these are the points, the measured values. आपने लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ कर दी इन द सेंटर, 3 पॉइंट्स अबव, 3 पॉइंट्स बिलो। So now this line of best fit represents average measured value, और एवरेज मेजर्ड वैल्यू जो है वो उसकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, जो थ्योरेटिकल लाइन है, जो ट्रू लाइन है, जो ऊपर ड्रॉ हुई है, बिल्कुल वैसी ही है। सो इट मीन्स कि जो आपकी एवरेज मेजर्ड वैल्यू है that is equal to the true value. So what do you think? Is there any systematic error or not? अब चैट को खोल के बैठ जाए because you have to give me the answers. No. So इस केस में there is no systematic error. And is there any random error? Yes, there is random error because sometimes the value is below the true value and sometimes it is less than the true value. So यहाँ पे आपके random error exists. चलिए अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। ओके, सो इन सेकंड सिनेरियो आपकी जो लाइन ऑफ पेसिविटी आ रही है वो आ रही है ये, like this. Now what do you think? Is there any systematic error or no? Yes, there is a systematic error. Why? Because जो हमारा जो ट्रू वैल्यू थी, जिस तरह का हमारे पास ग्राफ आना चाहिए वो आना चाहिए यहाँ पे। Now this value, this average value is deviating from the true value from one side. This line is on one side. So that is why there is some systematic error. What about random error? Random error है? Random error भी exist कर रही है because some values are greater this line and some values are below this line. So random error also exists. अब एक दो सिनेरियो और देख लेते हैं। तो सपोज आपने मेजर किया, आपके पास एक लाइन आई, वैल्यू सारी की सारी इसी लाइन के ऊपर है। Now this is not practically possible because there are always random errors. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होंगी, चाहे यहीं पे ही, इससे बिल्कुल यहाँ पे ही हो, but there will be some random error. So इसके अंदर आपकी, लेकिन अगर फर्ज कर लें कि ग्राफ आ गया है, so there is no random error, no systematic error. और अभी आपने जो क्वेश्चन किया है तो यस, रैंडम एरर का सिस्टमेटिक एरर से कोई रिलेशनशिप नहीं है, इट ऑलवेज एग्जिस्ट। रैंडम एरर से आप बच ही नहीं सकते, उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं बट यू कैन नॉट एलिमिनेट इट, वेयर एज सिस्टमेटिक एरर मे नॉट बी प्रेजेंट इन एनी मेजरमेंट, एंड इफ यू फाइंड दैट सिस्टमेटिक एरर इज प्रेजेंट यू कैन एलिमिनेट दैट। तो ये वैसे प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है। Why it is not a practical situation? Because random errors always present.